Good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? कालीर क्लास करि पारलेनी आमे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज प्रॉपर्ली करि हेलानी. आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक अच्छे आमे डिस्कशन करिया. आज टॉपिक अच्छे ऑन इन्फ्लेशन. ऑल क्लियर? रेडी समस्ते? Everyone ready? Everyone joined? Good evening Pihu. Very good evening Shivangi. All clear? All clear Pihu. Very good. ठीक আছে. बहुत बढ़िया. नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आसी जीवो. You can expect notification by tomorrow. Tomorrow is the last day of the month as well as the year. So आमे expect करि परिबा notification केतळे आसीबो ना. notification काली ही आसीबो 2025 रो notification नुहे कि 2025 notification काली ही आसीबो. तो समस्त रेडी अछंती? Are you all mentally prepared? Are you all mentally prepared? समस्त मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ काली नोटिफिकेशन आसीबो हाँ कि नहीं. काली नोटिफिकेशन आसीबो and you are going to appear the examination this year. This time you are going to appear. Are you mentally prepared? Yes, you are prepared. Others, are you prepared? गोटे बहुत बढ़िया कथा अच्छी महाभारत रे सुनी थिबे. रणभूमि से पहले युद्ध मनभूमि में खेला जाता है. कौन कहली? युद्ध रणभूमि से पहले मनभूमि में खेला जाता है. फील्ड रे खेलिबा अपेक्षा आ गोटे इंग्लिश रे कोन कहते? इट इज बेटर टू ब्लीड इन प्रैक्टिस ग्राउंड देन इन द वार फील्ड. Practice bleeding in the practice ground is more desirable than bleeding in the war field. War field रे नही practice ground रे bleed हवाटा that is better or always advisable. You are a +2 student, बहुत बढ़िया. तो you started preparation very early and this is the right time for your preparation. So nowadays many students are deciding to be a bureaucrat and they are starting preparation from 12th class only. 12th क्लास रो स्टूडेंट माने प्रिपरेशन स्टार्ट करछन जेटा बहुत भलो अचीवमेंट फ्यूचर रे दबो. ठीक अछि चला तले कोन पढिथिले? नमस्कार देवाशीष. कोन पढिथिले आमे लास्ट क्लास? एसएससी पाई नाही. एसएससी पाई बेसी डेप्थ को जीवा दरकार नहीं. ऊपर ऊपर पढिले हे जिवो.
एंड जहाँ भी आम क्लास रे पढ़ुचे क्लास रे अधिक पढ़ा जाऊनी जी दरकार व्हाट एवर रिक्वायर्ड से पढ़ा इकोनॉमिक्स रो क्लास प्रीलिम्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स 25 सेशंस रे 25 टा क्लास प्री कम मेंस रे 45 क्लासेस प्रीलिम्स 25 मेंस 20 क्लास टोटल 45 नंबर ऑफ क्लास इकोनॉमिक्स तो पूरा एथरे इकोनॉमिक्स जीएस 3 सहित आहुरी अनेक गुडे पार्ट जेमति सोशल डेवलपमेंट मध्ये मु एठी कवर कर दी सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट कवर्ड इन 45 क्लासेस देखो सो सबू एग्जाम व्हाट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट इज कवर्ड अंडर दिस कोर्स ये कोर्स अंडर सब गुडा कवर हो ठीक अछि चलो ताले आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को जीवा आज टॉपिक अछि इन्फ्लेशन टू बी डिस्कस्ड इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज नॉट अ वेरी न्यू टर्म फॉर अस आम ये गोटे नुआ टर्म नुहे इन्फ्लेशन आम बारंबार शुणीचे पूर्व शुणिच कि नहीं आम मार्केट जाऊे सका उठिकी परिवा किणुचे माछ किणुचे ग्रोसरी किणुचे घर को आसी कौन कहे सबू जिनस रेट बढ़ीगला बाबरे केते अधिक इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन इज स्पीकिंग एट अ वेरी हाई रेट घर को फेरिक आम या कहे माछ केजी 250-300 टंका है ग्रोसरी आइटम चूड़ा केजी 60 टंका है डाली केजी 110 टंका है तो आसिक आम कौन कहे कि प्राइस बढ़ुची now that increase in price is called inflation कौन कहली that increase in price बढ़िवा को inflation कहा जाए now inflation is not a cause of concern only for the public it is a cause of concern for public cause of concern for politicians cause of concern for the bureaucrats civil servants so समस्त inflation गोटे cause of concern कौन चाहते समस्त ना केमती inflation rate को reduce करा जाए how to reduce the rate of inflation how to reduce the rate of inflation है so inflation is very much common इताले inflation कौन यार definition कौन ना sustained increase in general level of price कौन कहूची sustained increase in general level of price general price level बढ़ी बाटा होची inflation कौन कहली general price level बढ़ी बाटा inflation मु कहि गोटे बिस्कुट रो वैल्यू 10 टंका थिला 20 वर्ष आगु आ एबे बढ़ी की 11 टंका है 10% इंक्रीज लास्ट 20 इयर्स ताने मास गोटे थर को 0.05% इंक्रीज तल एई जगह रे कोन कहबा ना कहि परिया कैन वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन प्राइस तो हाइक हेची बट दिस इज नॉट इन्फ्लेशन सिंपल प्राइस हाइक इज नेवर इन्फ्लेशन यस और नो मु कोन कहली सिंपल प्राइस हाइक सिंपली प्राइस ता बढ़िवा को इन्फ्लेशन कहा जाए सो इन्फ्लेशन इज सिंपली a sustained increase in general level of price for goods and services in a country this is how is it measured it is measured as an annual percentage change in price केमिति मेजर करूचे नितिन सिंघानिया सूर्यकांत yes नितिन सिंघानिया only for civil service नितिन सिंघानिया सिविल सर्विस एंड मेंस अप्रोच रे देइची बहिटा बट जो माने क्लास करछन मु बुक किछ रेकमेंड करिवेनी जो माने क्लास न करछन से माने नितिन सिंघानिया पढ़ी पारंती रमेश सिंह पढ़ी पारंती श्रीराम नोट्स पढ़ी पारंती देयर आर सो मेनी बुक्स यू कैन रेफर एनी वन गुड बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बट दोस फॉर अटेंडिंग माय क्लास आई विल नेवर रेकमेंड एनी बुक बिकॉज़ माय क्लास नोट्स आर मोर देन ऑल बुक्स क्लास नोट्स रे सबुठु अधिक अछि सेठी आउ किछि पढ़ियार आवश्यकता नै जो माने क्लास करछन रेगुलर माने बही पढ़िया एनी बुक यू कैन पिक ओके ताले इन्फ्लेशन हम देखले कोन सस्टेन इंक्रीज इन प्राइस प्राइस लेवल इंक्रीज करियो कोन कहूचे ना इन्फ्लेशन कहूचे एबे आसीबा इन्फ्लेशन कोन बुझेला फर्स्ट इन्फ्लेशन कोन बुझेला प्राइस लेवल हाइक हबा को हम कहले इन्फ्लेशन कोन कहली प्राइस लेवल हाइक हबा को बा बढ़ीबा को हम इन्फ्लेशन बोल कहले नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिबा व्हाट आर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन रो कारण कोन हे पारे ना इकोनॉमिक्स मु कहितली कालीर क्लास फर्स्ट क्लास रो हम देखुतले इकोनॉमिक्स कोन व्हाट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी व्हाट इज इकोनॉमिक्स कहितली इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ स्कार्सिटी होंगे नहीं इकोनॉमिक्स कौन ना इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी सेटा कहउछ हम इकोनॉमिक्स हैला सो स्कार्सिटी दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई this is all about demand and supply this is all about demand and supply जदि डिमांड बढ़ी जाए सप्लाई कमी जाए मार्केट रे 500 केजी आलू दरकार थिला एवं मार्केट रे 500 केजी आलू मिलुथिला नाउ डिमांड 500 केजी सप्लाई भी 500 केजी ताले किसी असुविधा नहीं आमे देखिले डिमांड बढ़ी के गला केते ना 1000 केजी एवं सप्लाई 500 केजी रु कमी के गला केते ना 400 केजी ताले ये जगह रे प्राइस बढ़ीबो ना नहीं मते को इन दिस कंडीशन प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज और नॉट सिंपल कथा डिमांड इंक्रीज होची सप्लाई डिक्रीज और इवन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट डिमांड इंक्रीजेस एटी 400 केजी न रही कि 500 केजी सप्लाई अच्छी बट डिमांड 1000 केजी हे गला प्राइस बढ़ीबो ना नहीं बढ़ीबो आखि बंद करी कहबो हां प्राइस बढ़ीबो कोन कहले आखि बंद करी कहबो हां प्राइस बढ़ीबो हां कि नहीं प्राइस इंक्रीज होची कि नहीं यस प्राइस इंक्रीजेस ताले सिंपल कथा डिमांड बढ़ी गले प्राइस बढ़ी जीवो सरला कथा ना तुम को सर एग्जांपल कोन मु यार गोटे बेस्ट एग्जांपल देबी कोरोना समय रे गोटे मास्क रो दाम केते थिला ड्यूरिंग कोविड-19 व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ अ मास्क रो दाम बढ़ी कि 50 टंका रु 100 टंका पर्यंत हे गला केते मास्क गोटे मास्क रो दाम बढ़ी कि 50 रु जहार वैल्यू 10 टंका रु 20 टंका पड़े जो मास्क रो मूल्य 10 टंका रु 20 टंका पड़े सेटा इंक्रीज हे कि कोरोना समय रे केते हे गला 50 रु 100 टंका काहे कि बिकॉज़ ऑफ डिमांड और नॉट यस और नो मते खाली कोन बिकॉज़ ऑफ डिमांड और नॉट ताले मु कोन कहली जेतेबेले प्राइस इंक्रीज होची बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन कहली जेतेबेले प्राइस इंक्रीज होची बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड जेतो डिमांड इंक्रीज पई प्राइस पढिले हमें ताको कहूचे कोन ना दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन कहूचे ताको कहूचे डिमांड पुल बुझियला व्हाट इज डिमांड पुल वेरी इजी नाउ इकोनॉमिक्स पूरा इजीएस्ट वे रे इजीएस्ट मेथड रे पढै कोन कहली इकोनॉमिक्स पूरा इजी वे रे हमें पढुचे द मोस्ट इजीएस्ट वे रे पढुचे हम इकोनॉमिक्स आई होप समस्त बुझुचन ताले कोन कहली डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़ुची दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाउ द क्वेश्चन इज डिमांड केते बेले बढ़िबो नाउ द क्वेश्चन इज डिमांड केते बेले बढ़िबो को कंडीशन रे डिमांड बढ़ुची मु कहबी पॉपुलेशन इंक्रीज हेले डिमांड बढ़िबो यस और नो कोन पॉपुलेशन इंक्रीज हेले डिमांड बढ़िबो यस और नो पॉपुलेशन बढ़िले डिमांड बढ़िबो कि बढ़िबोनी हां कि नहीं इनकम लेवल बढ़ी गला मोर इनकम बढ़ी गला जने मास को 20000 इनकम करथला वेजिटेबल्स खाउथला 20000 रु ऑल ऑफ सडन ता इनकम बढ़ी कि मास को 40000 हे गला से वर्तन फ्रूट्स कंज्यूम करिवो जने चा पिउथला 20000 इनकम रे 40000 हे गला से कॉफी पीबो हां कि नहीं जने बाइक चलाउथला एबे से कार रिक्वायरमेंट करिवो ताले इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो कि नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ हेले डिमांड बढ़िबो कि नहीं मार्केट रे 500 केजी आलू दरकार थिला पॉपुलेशन बढ़ी गला तो 600 केजी आलू दरकार हो तापर 700 केजी दरकार हो ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज यस और नो मु कहि बायर रो बिहेवियर जदी चेंज होची पूर्वरु बायर कोन किनुथला ना पूर्वरु बायर को डाटा दरकार नथिला पर डे खाली कॉल हेले हम खुशी नोकिया 1208 मॉडल आस्तला मन को समझ नोकिया 1208 रे हम फोन करथि नाउ एबे कोन स्मार्टफोन यूज करछे एंड 1.5 जीबी 2 जीबी 3 जीबी पर डे डाटा रिक्वायरमेंट नाउ काहे ना एवरीथिंग इज बीइंग ऑनलाइन सो ऑनलाइन हवा कारण डाटा रो आवश्यकता अछि वर्तमान अधिक रु अधिक so there is change in buyers behavior kon eti change hochi ki nahi purboru there is no requirement of data now there is a requirement of 1.5 GB 2 GB data yes or no
So for changing buyers behavior, agreed? For changing buyers behavior, agreed or not? एवं जदि लिक्विडिटी मनी सप्लाई बढ़ी जाए पाखरे 500 टंका थिला तो जने वेजिटेबल किणुला 1000 टंका हो गला से फ्रूट्स किणिबो आउ टिके पैसा बढ़ी गला से एक्सोटिक फ्रूट्स किणिबो इंपोर्टेड फ्रूट्स किणिबो हां कि नहीं एक्सोटिक फ्रूट्स बा इंपोर्टेड फ्रूट्स किणिबो एग्रीड ताहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन एई चारिटा कंडीशन रे हेई थाए कोन कोन आउ थरे कहूची पॉपुलेशन ग्रोथ हेले इनकम लेवल बढ़िले कोन कहली पॉपुलेशन ग्रोथ हेले इनकम लेवल बढ़िले बायर्स बिहेवियर चेंज हेले एवं लिक्विडिटी इंक्रीज हेले इन द मार्केट एई चारिटा इन दिस फोर कंडीशन व्हाट हैपेंस डिमांड इंक्रीजेस कोन कहली दिस फोर कंडीशन डिमांड इंक्रीजेस एंड हेंस called this is called demand pull inflation clear what is demand pull समस्त clear demand pull कौन demand pull inflation कौन because of price in demand when price increases that inflation is known as demand pull inflation कौन कहली प्राइस जेतेबेले बढ़ुची डिमांड बढ़िवा कारणरू ताकू डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहूचे यस और नो समस्त गॉट इट यू बुझी गला बहुत बढ़िया गॉट इट बहुत बढ़िया PU nowadays PU is a very common name huh? My daughter's name is also PU मो झियो ना भी PU साना झियो सर लिक्विडिटी टिके बुझी दियंतु ओके देखो लिक्विडिटी रो अर्थ होची अमाउंट ऑफ मनी लेखिक रख जार लिक्विडिटी मन न रहउची न बुझी परछ लेखिक रख अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मनी amount of money or quantity of money केते टंका अछि पाखरे दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी मु कहली ना 500 टंका नै कि जाउतली वेजिटेबल किनुतली 1000 टंका जोन पॉकेट रे मार्केट को नै गली फ्रूट्स किनली 2000 टंका नेले इंपोर्टेड फ्रूट्स किनली हां कि नै 3000 नेले आउ कोन कस्टर्ड किनली एंड ऑल दोस प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ुछ पूर्वरु छोट बळे जो स्कूल जाउतले टंका डे 2 टंका नै कि जाउतलो कोन किनुतलो टंका डे चॉकलेट किनुतलो चटपटी आस्तला माने गोटे कमला चॉकलेट आस्तला जदि कि खाइथिबे चटपटी खाउतले 50 पैसा रे खीरा चॉकलेट कमला चॉकलेट छोट छोट चॉकलेट आसनथिला सब 10 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा नो पैसा बढ़िला पॉकेट मनी जेतो 10 टंका 20 टंका नेला बड़ होई कि सेतळे आलुदम दहीबरा को गला पुनी 100 टंका हला पिज्जा पेटिस बर्गर एठी गला देन 5 टंका नै कि गले डोमिनोस को गला 1000 टंका नै गले केएफसी गला now this is a liquidity increase means your demand is increasing liquidity means amount of money what is liquidity liquidity means amount of money पाखरे केते टंका अछि टंका बढ़िले डिमांड बढ़िबो कि नै टिके कोंदो मते टंका बढ़िले डिमांड बढ़िबो कि नै लिक्विडिटी बढ़िला रे के पचारथिलो कोन छ राइटर दक्ष साहू ओके राइटर दक्ष साहू दक्ष बुझिएला दक्ष बुझिला लिक्विडिटी लिक्विडिटी मींस अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीजेस हाँ महालाक्टो चॉकलेट आसला 50 पैसा आउ कौन चॉकलेट आसला सब छोट बड़े महालाक्टो 5% चॉकलेट गोटे आसला बूमर माने अछि बिग कौन गोटे आसला बूमर बळिया बबलू कम हाँ कि नहीं तापर टिके बढ़ी के सेंटर फ्रूट चलो ठीक है एनीवे तल डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमें बुझले ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट कोन इकोनॉमी ऊपर टिके देखियो डिमांड पुल इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट कोन देखिबा इकोनॉमी ऊपर मते कोंतु तो डिमांड बढ़ुची प्रोडक्शन बढ़िबो ना नहीं when demand is increasing production will increase or not yes or no डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो ना नहीं बढ़िबोनी तो हां बढ़िबो कोन कहबो डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो एब्सोल्युटली करेक्ट
प्रोडक्शन बढ़िले प्रोडक्शन करिवो कि ना एम्प्लॉय करिवे ताले एम्प्लॉयमेंट बढ़िवो कि नहीं कोन कहली डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़ियो प्रोडक्शन बढ़िले एम्प्लॉयमेंट बढ़िवो कि बढ़िवोनी यस इंक्रीज अच्छा प्रोडक्शन बढ़िले मॉनिटरी वैल्यू बढ़िवो कि नहीं जीडीपी बढ़िवो कि नहीं प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हेले जीडीपी इंक्रीज हबो कि नहीं कोन कहली प्रोडक्शन इंक्रीज हेले जीडीपी इंक्रीज हबो कि नहीं यस जीडीपी इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िबो ना कमिबो जेतु प्रोडक्शन बढ़ुची किए करिवो एम्प्लॉइज करिवे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी गला अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल रिड्यूस और इंक्रीज ऑफ कोर्स ओके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िबो ना कमिबो व्हाट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस जदि एम्प्लॉइज मानकु एम्प्लॉयमेंट इजीली मिलुची ताले वेज रेट बढ़िबो ना नहीं दरमा बढ़िबो कि बढ़िबोनी वेज रेट बा दरमा बढ़िबो ना बढ़िबोनी यस यस वेज रेट बा दरमा बढ़िबो राजी वेज रेट बा दरमा बढ़िबो सो दीज आर macroeconomic impact of demand pull inflation so full employment of resources rise in real gdp fall in unemployment rate upward revision of wages ये सब गुडा काम को इंपैक्ट पड़ियो ताल डिमांड पुल आमे बुझी गल हैला आउ गोटे साइड देखिया डिमांड साइड देखिले एबे सप्लाई साइड देखिबा नो सप्लाई डिमांड किए करूची डिमांड बाय हुम डिमांड इज by the consumer demand is by consumer supply के करती ना supply is by supplier supply के करूची supply is by the supplier yes or no supplier बा कोई परि मु मैन्युफैक्चरर कौन कहू सप्लायर बा मैन्युफैक्चरर कहि परिबे हैला ताले एटी मैन्युफैक्चरिंग करिया पई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दरकार कौन कौन ना लैंड लेबर हो कि नहीं कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ना ये चारिटार प्राइस जदि बढ़ी जाए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर रो प्राइस जदि बढ़ी जाए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर रो प्राइस बढ़िले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी गला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िले प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िबो कि नहीं मु कहली ये प्रोडक्ट रो प्राइस 20 टका पेन 20 टका रे किनची बर्तमान लैंड कॉस्ट लेबर कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट एंटरप्रेन्योर कॉस्ट बढ़े ये कोन मतलब 20 टका रे मिलिबो की नो इनपुट कॉस्ट बढ़िले आउटपुट कॉस्ट बा मार्केट प्राइस बढ़ी जीवो यस और नो यस बढ़ी जीवो तले यार आउटपुट कॉस्ट बढ़ी गला इनपुट कॉस्ट बढ़िबा कारण पेन 20 टका रे मिलुथिला मते 30 टका रे मिलियो ताले हे गला इन्फ्लेशन प्राइस बढ़िबाटा कहितली इन्फ्लेशन ना ताले हे गला इन्फ्लेशन 20 टका रे मिलुथिला एबे 30 रे मिलिला तो एटा सप्लाई साइड रुला एठी डिमांड बढ़िले जते बेले होउतिला कंज्यूमर रो डिमांड जते बेले बढ़िले होउतिला आकु कहउतिला डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन कहउतिला डिमांड पुल इन्फ्लेशन जेतले सप्लायर रो फैक्टर ऑफ कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़िबा कारण रु हैला आकु कहा गला कोन ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन कहला को दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन कहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बुझी पारले कि नहीं कॉस्ट पुश कोन आ डिमांड पुल ना मत आ बुझाय पड़ियो जदी कोन
cost push और demand pull clear. What is cost push and what is demand pull? बुझिला what is cost push and what is demand pull? Okay, very good. ताले ये जो cost push inflation shortage in supply रे भी बढ़िबो नहीं सप्लाई टा शॉर्टेज होची कॉस्ट पुश माने कॉस्ट टा कोन पुश होची बढ़ुची बुझुची कि नहीं कॉस्ट टा बढ़ी गला कॉस्ट पुश कोन कॉस्ट पुश हैला डिमांड पुल माने कंज्यूमर आडू डिमांड बढ़िला पुल माने टाणीबा बुझु सेति पय कहआ जाय शॉर्टेज हेले तो बढ़ी सेटा तो डिमांड सप्लाई हे गला शॉर्टेज इन सप्लाई हेले सेटा तो डिमांड पुल हे गला बा डिमांड कमिवा कारण रो हे गला डिमांड सप्लाई कथा जेतेबेले आसीबो सेतेबेले सेटा डिमांड पुल ले आसीबो when it is all about price of production cost of production factor of production then that is cost push now ये cost push टा temporary ना permanent temporary अच्छा cost push रे economic growth अधिक होबो कि नहीं अच्छा मते को डिमांड पुल ले economic growth अधिक ना कम डिमांड पुल रे economic growth रे अधिक ना कम what happens in demand pool less economic growth or more economic growth डिमांड पुल इकोनॉमिक ग्रोथ मोर बिकॉज प्रोडक्शन अधिक होउची ना एठी प्रोडक्शन कमी जाए सो एठी लोअर रियल जीडीपी बा लेस इकोनॉमिक ग्रोथ कोन कहली बा लेस इकोनॉमिक ग्रोथ बुझिला ताले डिमांड पुल और कॉस्ट पुश भीतर कोन डिफरेंस देखिबा डिमांड पुल कोन ना एटा एक्सेस मनी सप्लाई पय हेला बोली कहि परिबी कोन कहली मनी सप्लाई बढ़ी बारू डिमांड पुल हेला बोली कहि परिबी मनी सप्लाई बढ़ला मोबाइल पैसा बढ़ला सो डिमांड हेला अधिक हो कि नहीं मो पर पैसा अधिक होला सो डिमांड पुल हे गेला रियल जीडीपी इंक्रीज और डिक्रीज ना रियल जीडीपी डिक्रीज इंक्रीज जीडीपी प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी बढ़िला कोन अछि रियल जीडीपी इंक्रीज unemployment rate fall yes unemployment rate fall unemployment rate fall cost push रे कोन होउची this is supply shock inflation mainly due to rising production land labor cost कहली now demand pull inflation ने good economic growth yes or no yes good economic growth बुझेली केमिति how good economic growth money supply increase ହେଇची एठी it is due to shortfall in agricultural production so slow industrial growth rate एठी कोन ना slow industrial growth rate हैला ओके ताले बुझे गेला मत लागुची एठी किछ डाउट नाही यदि डाउट अछि मते पचार जति जो दीटा पॉइंट बुझेली यदि ये दीटा पॉइंट भितर डाउट अछि ताले पचार तापर नेक्स्ट पॉइंट बुझिबी
एतिकी पॉइंट भीतर किसी डाउट अच्छी कि मत लागुनी डाउट अच्छी यदि अच्छी पचार अच्छा रेट ऑफ इन्फ्लेशन अनुसार देखिबा कौन कहले रेट ऑफ इन्फ्लेशन जदि 0% रु 3% पर्यंत रेट इंक्रीज हुए ताल ताको कहा जाए क्रीपिंग इन्फ्लेशन कौन कौन दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्रीपिंग माने केते परसेंट 0 रु 3 100 टंका थिला प्राइस बढ़ी की 101 102 103 या भीतर रहले कौन कहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन यदि 3% रु नहीं कि 10% भीतर हुए केते कहली जदि 0 रु 3 हेले क्रीपिंग जदि 3 रु 10 हुए ताल ता कहे वाकिंग इन्फ्लेशन कौन कहनी दैट इज कॉल्ड वाकिंग इन्फ्लेशन बुझियला वाकिंग कोठी ठीक सेमती 10 रु 20% गोटे स्लैब आउ गोटे 20 रु 100% हैला आउ गोटे स्लैब यदि एटी 10 रु 20 हुए ताको कहा जाए रनिंग इन्फ्लेशन एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन कोडा 20 रु 100 बा गैलोपिंग इन्फ्लेशन कौन कहल दिस इज कॉल्ड हाइपर बा गैलोपिंग इन्फ्लेशन बाकू रन अवे बोली मध्य कहा जाए रन अवे इन्फ्लेशन बोली मध्य आकू कहा जाए हैला वाकिंग टाकू ट्रॉटिंग बोली मध्य कहा जाए वाकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन वाकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन मो कथा बुझियला इटा क्रोनिक आसवा सेटा जस्ट गोटे इंग्लिश टर्म हिसाब से यूज होता बारंबार जब दीर्घ दिन धरिक इन्फ्लेशन लगी रहे तो क्रोनिक कह दीर्घ दिन धरिक जब लगी रोच नाउ क्लियर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन टाइप्स based on rate of inflation based on rate of inflation मन नहीं ला नेक्स्ट देखिए आमे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टा को मेजर केमती करियो जो प्राइस देखुचे आमे दी प्रकार प्राइस गोटेला होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना आ गोटेला करना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स रे हम कोन देखुचे होलसेल प्राइस केते बढ़ी छि कंज्यूमर माने हम जोटा रिटेलर टू किनुचे ना पब्लिक कहा टू किनिबो पब्लिक परचेजेस फ्रॉम retailer purchases from wholesaler ए प्राइस टा कहले WPI ए प्राइस टा कहले CPI consumer price index so wholesale price index and consumer price index ए दिटा जाक एठी यूज करा जाउछ कोन कहले wholesale and consumer price index now WPI जदि हम देखिबा ये कौन क्वेश्चन है इट मेजर्स चेंजेस इन होलसेल मार्केट प्राइस ऑन मंथली बेसिस it was first published in 1942 केबे it was first published in 1942 authority department of industrial policy and promotion under ministry of commerce and industry Dr. Sumitra Chaudhary committee was appointed by government of India to review WPI methodology कौन कहली to review WPI
मेथोडोलॉजी एटा किए ना डॉक्टर सुमित्रा चौधरी कमिटी 2012 रे आसला डब्ल्यूपीआई रे 697 कमोडिटीज आर टेकन ये गला डब्ल्यूपीआई बेस ईयर कथा कहि देन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस कौन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर पाई डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीआई अछि जेमति कि सीपीआई आईडब्ल्यू मींस इंडस्ट्रियल वर्कर पई अछि एग्रीकल्चरल लेबरर मानक पई सेपरेट रूरल लेबरर मानक पई सेपरेट ना रूरल अर्बन एवं कंबाइंड सेपरेट कौन कहली रूरल अर्बन आउ कंबाइंड सेपरेट हैला बेस ईयर ये तुम क्वेश्चन पचारियो बेस ईयर कोठी कोन यूज होची एठी बेस ईयर यूज होची 2016 कोठी सीपीआई आईडब्ल्यू रे पूर्व था 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेंज करला 2020 रे चेंज करी करला केते 2016 बेस ईयर एग्रीकल्चरल लेबर 1986-87 आरएल पाई 86-87 रूरल अर्बन कंबाइंड पाई 2012 न किए आको सब पब्लिश करछ ना ए तीनटा जाक दे आर पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो कोड अछि ना लेबर ब्यूरो शिमला कोठी लेबर ब्यूरो शिमला बुझिला लेबर ब्यूरो शिमला okay else it is CPI RM and combined this is by NSO next CPI rural urban combined rural रे 448 आइटम्स निया जाउची urban रे 460 एवं बेस ईयर टा एठी चेंज अछि 2010 रु 2012 अच्छा सीपीआई टा को यूज करा जाय कोन माने डीए जो देखिन डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करा जाय तो दरमार सहित डीए आसुनी मिसिकी डीए कैलकुलेट करिया को सीपीआई इज यूज नॉट डब्ल्यूपीआई मन रखियो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे आरबीआई यूज करन सीपीआई कंबाइंड नॉट डब्ल्यूपीआई सो डीए एवं इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे सीपीआई यूज करा होची नॉट डब्ल्यूपीआई इज दिस क्लियर नाउ ये क्वेश्चन एआई से क्वेश्चन पचारियो नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला जीडीपी एट करंट प्राइस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कौन कहली जीडीपी एट करंट प्राइस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एबे टिके बुझो करंट प्राइस कोन और कांस्टेंट प्राइस कोन मु नेली करंट ईयर आउट नेली मन कर बेस ईयर रे प्रोडक्शन केते हिची नेबी प्राइस केते नेबी ठी गोटे पर यूनिट एवं जीडीपी केते कैलकुलेट करी मन कर बेस ईयर नियाला केते ना 2011-12 हला बेस ईयर जोटा साधारणतः निया जाउछ करंट ईयर केते ना एई वर्ष करंट ईयर केते ना 2025-26 फाइनेंशियल ईयर हैला सो प्रोडक्शन लेट्स से करंट ईयर रे बेस ईयर रे प्रोडक्शन हितला मन कर 100 यूनिट 100 यूनिट कोन पेन 100 टा पेन प्रोडक्शन हितला गोटे पेन रो प्राइस केते थिला ना 10 टका जीडीपी केते हिजिवो एटा इनटू एटा 10 रुपीस थिला पर पेन ताल जीडीपी केते ना 100 गुणन 10 समान 1000 टका जीडीपी हला केते जीडीपी हला 1000 टका बुझियला ना करंट ईयर मन कर एई वर्ष प्रोडक्शन कमी जाई 100 टा हितला एटी हिजि केते ना 80 टा 80 यूनिट्स केते 80 यूनिट्स हिजि एवं प्राइस बढ़ी जाई के जाई 12 टंका पर यूनिट केते ना 12 रुपीस पर यूनिट जीडीपी केते मन आउ टिके बढ़ाई दउची ता 13 टंका कर दउची जीडीपी केते जो ना 13 into 80 समान 1040 रुपीस जीडीपी केते 1040 रुपीस एठी जीडीपी इंक्रीज हला कि नहीं एठी थिला 1000 टंका एठी 1040 जीडीपी इंक्रीज और नॉट यस बट एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कमी कि नहीं एठी 100 टा होतला एठी 80 टा हिच प्रोडक्शन कमी जाइछि बट डाटा देखौ कि जीडीपी बढ़ी गला तमे तो जीडीपी बहुत बढ़िया बढ़ी 1000 थिला 1040 हे गला 40% इंक्रीज सॉरी 4% इंक्रीज हे गला जीडीपी इंक्रीज हला के ना 4% जीडीपी इंक्रीज हे गला 40 इंक्रीज हे गला बट एक्चुअली जीडीपी बढ़ी किंतु को प्राइस रे एटी प्राइस बढ़िया कारण 13 टंका हवा कारण बढ़िला जदी एई प्राइस रे देखिबा 10 टंका प्राइस रे ताले एटा केते हो ना 80 into 10
800 टंका हो एटी देख 1000 टंका ये 800 टंका एटी इंक्रीज हिच ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस हैला ताले ये 800 टंका को कुआ जाए रियल जीडीपी एवं ये 1040 को कुआ जाए नॉमिनल जीडीपी nominal GDP is calculated in current year price real GDP is calculated in base year price हैला बुझिला रियल जीडीपी कोन नॉमिनल जीडीपी कोन करंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट कले ताको कुआ गला कोन ना नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट कले ताको कुआ गला रियल जीडीपी कोन कहले ताको गला रियल जीडीपी बुझिला रियल कोन नॉमिनल कोन एग्जैक्टली एटा को डिवाइड कले जीडीपी एट करंट प्राइस बा एटा को दिस इज कॉल्ड nominal GDP divided by GDP at constant price that is real GDP into 100 is equals to called as GDP deflector कौन कहले is equals this is called as GDP deflector बुझेला what is GDP deflector nominal GDP by current price रे GDP divided by GDP at constant price बा जहा को real GDP into 100 ता को GDP deflector समस्त बुझिले ना किए बुझिलेनी यदि बुझिलो कुह यदि न बुझिलो भी कुह को जल्दी को बुझेला कि बुझेलानी हैला ताले डब्ल्यूपीआई सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई सीपीआई जीडीपी रिफ्लेक्टर तीनटा जिंस क्लियर ए तीनटा को यूज करके इन्फ्लेशन मेजर करा जाए बुझे गला ताले मेजर केमती करा जाउची नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखिबा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर ऊपर कौन पड़ुछि एवं कंज्यूमर कौन ऊपर कौन पड़ु सिंपल फार्मूला कहूची गोटे मन रखिबे पीजीसीएल प्रोड्यूसर गेन कंज्यूमर लॉस सेमती डेटर गेन क्रेडिटर लॉस डीजीसीएल मन रखिबे कौन कहली गेन किए करूची इन्फ्लेशन रे और लॉस का रहउची ना गेन करूची डेटर लॉस कार ना लॉस होउची क्रेडिटर गेन करूची किए ना प्रोड्यूसर लॉस करूची किए ना कंज्यूमर बुझौची केमती होउची केतबेला ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कार लाभ कार केते मते को इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ी गला ताले प्रोड्यूसर लाभ करिवो ना क्षति करिवो प्राइस बढ़ी गले प्रोड्यूसर लाभ हबो ना क्षति हबो when price increases producer gain करूची ना क्षति करूची कहना से प्रोडक्शन अधिक करिवो प्रॉफिट करिवो कहना से प्रोडक्शन अधिक करिवो से 10 टका लाभ करथिला एबे इन्फ्लेशन रे जाईची 12 टका करिवो से लाभ अधिक करिवो से प्रोडक्शन अधिक करिवो हंग नहीं लाभ अधिक कले से प्रोडक्शन अधिक करिवो सरला कथा बुझिला
नाउ डेटर आउ क्रेडिटर रे किए लाभ कर डेटर केमती गेन करिवो डेटर किए जे लोन नेइच जे डेट नेइच क्रेडिटर किए जे क्रेडिट रे देइछि क्रेडिटर केमती करिवो माने करो ए बी को 100 टंका देइछि सो ए किए आउ बी किए आउ बी किए ए हला ए देइछि ए इज द क्रेडिटर क्रेडिट रे देइछि बी के ना बी इज द डेटर बी डेट रे नेइछि है बी नहीं कि करूछि कोन ना लेट से बी रो बिजनेस अछि पेन बिजनेस सी पेन किनिला पेन रो प्राइस अछि केते ना 10 टंका पर यूनिट गोटे पेन को 10 टंका तल से 100 टंका नहीं कि केतरा पेन किनला ना 10 पेन्स 100 टंका नहीं केते किनला ना 10 टा पेन किनिला मन कर यार प्राइस बढ़ी गला हमको देखले तापर से ठीक नेला परे हां ये कहि कि मु 100 टंका नेली तो फेरेबी केते ना 110 टंका फेरेबी 110 टंका फेरेबी ये फेरेबा पूर्वरु कोन हला ना इन्फ्लेशन हे गला ए ये ठीक किनि सार इन्फ्लेशन हे गला इन्फ्लेशन है कि पेन रो प्राइस बढ़ी गला 10 टंका रु बढ़ी कि 15 टंका हे गला हैला ये बर्तन 10 टा पेन किनि देछि या 10 टा पेन रो वैल्यू एटी केते हे गला ना 150 टंका केते 150 टंका ये ताको 110 टंका रिटर्न दे देला बर्तन क्रेडिटर 110 टंका रे पेन किनले केतरा पेन किनिबो 110 डिवाइडेड बाय 15 गोटे पेन रो वैल्यू 15 तो 7 टा पेन ये किनि परिबो क्रेडिटर केतरा पेन किनिबो ना 7 पेन्स ओनली बट डेटर केतरा पेन एटी किना ना डेटर केतरा पेन किनला डेटर पाखरे एटी केतरा पेन ना 10 टा पेन 10 पेन्स तले कहार लाभ होला डेटर रो लाभ होला नी डेटर देन डेटर गेन और नॉट हाँ कि नहीं डेटर गेन करूची कि नहीं सरला कथा ये वाला तापर मत को ये ला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट गेन आउ के करूची ना फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप जने कर इनकम फ्लेक्सिबल चेंज होची आ गोटला फिक्स्ड इनकम ग्रुप फिक्स्ड इनकम ग्रुप फिक्स्ड इनकम ग्रुप किए फिक्स्ड इनकम ग्रुप के जो माने सैलरीड एम्प्लॉय जो माने जो माने सैलरीड सैलरीड किए ना सैलरी जो माने फिक्स्ड इनकम ग्रुप फिक्स्ड इनकम ग्रुप एटी खाली लिखुची जो माने सैलरी आ गोटे लिखे ना फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप किए लाभ किए क्षति लाभ कहार क्षति कहार फ्लेक्सिबल किए ना डॉक्टर लॉयर माने फ्लेक्सिबल बिजनेसमैन से ताको प्राइस बढ़ाई देबे फिक्स्ड किए ना जे सैलरी 20000 ना जे 20000 पाउथला इन्फ्लेशन हे गला सब जिंस से अधिक रेट पे किनुची तबे भी ता दरमा 20000 फ्लेक्सिबल किए ना जे ता इनकम टा को बढ़ाई पारुची दैट इज फ्लेक्सिबल सो फ्लेक्सिबल इज प्रॉफिटेबल करेक्ट फ्लेक्सिबल गेन एंड इटा फिक्स्ड इज लॉस और फिक्स्ड दिस इज लॉस क्लियर कौन होची कहार ना बुझिलानी अच्छा जदि प्राइस बढ़ी जाए ताहले एक्सपोर्ट बढ़िबो ना कमिबो इन्फ्लेशन ने कोन हैला इन्फ्लेशन बढ़िले कोन हैला ना प्राइस बढ़िला इन्फ्लेशन बढ़िले प्राइस बढ़िले एक्सपोर्ट बढ़िबो ना कमिबो एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट जोटा हम करथले पठो सेटा बढ़िबो ना कमिबो प्राइस बढ़ी गला से 10 टंका रे नउथला आगरु पेन मन कर नउथला गोटे यूएस रो गोटे लोक इंडिया रो 10 टंका रे एबे प्राइस बढ़ी के गला केते 12 टंका से किनिबो ना किनिबोनी आ प्राइस बढ़िले सिंपल कथा डिमांड फंक्शन ने काली पढौतले फर्स्ट क्लास रे डिमांड फंक्शन आई डिस्कस्ड
डिमांड फंक्शन डिस्कस करछि प्राइस बढ़िले कोन ना डिमांड कमी जीवो सो प्राइस बढ़िले डिमांड कमी जीवो तो डिमांड कमिले एक्सपोर्ट कमी जीवो एक्सपोर्ट कमी जीवो तो एक्सपोर्ट कमी जीवो एंड इंपोर्ट अधिक रही तो कोन बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ी गले कोन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कौन कहते ताको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बुझेला ताले समाधान को पळे आसिया सॉल्यूशन कौन करि परिबा या व्हाट आर द सॉल्यूशंस सॉल्यूशन कौन ना मॉनिटरी पॉलिसी कौन क्रेडिट कंट्रोल मेथड वर्तमान मु कहबिनी क्रेडिट कंट्रोल मेथड मु कहबी तो आरबीआई क्लास पढेबी बैंकिंग क्लास इट लिखि तो रेफर बैंकिंग क्लास रे तो आरबीआई ऊपर डिस्कशन करबी सेठी कहबी एबी किछि पढौनी मॉनिटरी कंट्रोल पढेबी सेठी फिस्कल कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करियो डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा भी टैक्स क्लास रे कहबी काहे कि एटा कोडा बढ़िबो कोडा कमियो रेफर टैक्स क्लास हैला नाउ ट्रेड मेजर मते को एटी कोन करिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोन करिया एक्सपोर्ट ता कमुच इंपोर्ट बढ़ुच तो एटी ट्रेड मेजर मींस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब रेस्पेक्टिव क्लास रे पढ़ी रिलेटेड टू एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरप्लस बजेट माने रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर कम एक्सपेंडिचर करिया कथा कहू सरप्लस बजेट देन लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस बढ़ुची तो प्राइस टा को रिड्यूस करबा दैट इज कॉल्ड लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस कोन को जेहेतु प्राइस बढ़ुची प्राइस को रिड्यूस करबा कमेइबा को चेष्टा करबा प्राइस लीगली रेशनिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्स इन रेशनिंग माने समस्तंक पाखरे पहुंचबो कोन कहली यार अर्थ समस्तंक पाखरे पहुंचबो इंक्रीजिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी सेम थी पब्लिक सर्विस डिलीवरी समस्तंक पाखरे पहुंचबो एनर्जी इंपोर्ट रिड्यूस करियो एनर्जी इंपोर्ट माने तुम जोडा हेगला कोन पेट्रोलियम पेट्रोल टा को रिड्यूस कर दो पेट्रोल रिड्यूस कर दो ऑटोमेटिकली कोन पेट्रोल रिड्यूस कर देले ऑटोमेटिकली कोन हो प्राइस कमी जो सब कोन पेट्रोल रिड्यूस कले ऑटोमेटिकली प्राइस रिड्यूस हो जो हां कि नहीं यदि एति भीतर डाउट रहला को any doubt on this any doubt on this आ गोटे कांसेप्ट लास्ट कहबी देख एटा हम एमती टाइम नेले जनवरी एक्स एक्सिस कथा कहू फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून एटी एक्स एक्सिस रे टाइम ने गले वाई एक्सिस रे हमें रेट ऑफ चेंज ने गले एटी +5% +10% +15% एटी माइनस होची प्राइस -5 -10 -15 -20 जो होची एटी तो प्राइस बढ़ीला हमें ताको कहले कोन ना इन्फ्लेशन कोन कहले तो प्राइस एटी बढ़ुची हमें कहले दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन तो प्राइस इंक्रीज होची कोन हबो हमें डेलिबरेटली गवर्नमेंट इंटरफेयर करी कि प्राइस टा को कमेइबो कोन कहले डेलिबरेटली गवर्नमेंट कोन करू ना इंटरफेयर करी कि प्राइस टा को कमेइबो इन्फ्लेशन ने हमें देखले प्राइस बढ़ुची तो प्राइस कमे ठीक तार उल्टा ताको जे डिफ्लेशन प्राइस देखो ना बेले टमाटो प्राइस कमी कि टंकाटा 50 पैसा जीवो ताको चासी नबनी सी खेत रे फोपाड़ दो फार्मिंग लैंड रे फोपाड़ दो नष्ट करिया को प्रेफर करियो ताको कहले डिफ्लेशन ना इन्फ्लेशन हला प्राइस बढ़िले तो बढ़े गवर्नमेंट चाहिबो ता प्राइस कमेया को देखिनो आलू रेट आलू दर वृद्धि पाइला गवर्नमेंट ऊपर प्रेशर गवर्नमेंट कोन करियो आलू दर कमेयो तो हठात बढ़ितला 20 टका जगह आलू केजी 70 टका 70 तो कमी कि हठात 20 होबनी धीरे धीरे 70 65 60 55 50 40 30 एमती 20 टका
ना जो ये धीरे धीरे कमे इन्फ्लेशन रेट टा धीरे धीरे कमिवा को कहा जाए डिसइन्फ्लेशन कौन कौन दैट दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन हैला डिफ्लेशन हेले सप्लायर पई खराब बा प्रोड्यूसर पई खराब प्रोड्यूस कमी गले सेटा प्रोड्यूस टा बिकियो कोठी कमी गले सेटा पैसा टा बिक्री ता जिंस टा बिक्री कोठी करियो सेति पई गवर्नमेंट एटी इंटरफेयर करके प्राइस टा को बढ़ाइबा दरकार गवर्नमेंट इंटरफेयर करितले प्राइस बढ़ाए ताको कोनदी रिफ्लेशन कोन कोनदी गवर्नमेंट इंटरफेयर करी प्राइस बढ़ाइले ताको रिफ्लेशन बुझी गला इन्फ्लेशन न ठीक ओलोटा डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ने प्राइस बढ़ुची डिफ्लेशन ने प्राइस कमुची डिसइन्फ्लेशन ने इन्फ्लेशन रेट कमा होची रिफ्लेशन ने डिफ्लेशन रेट टा बढ़ा होची और ये चारिटा पॉइंट चारटा कांसेप्ट एटू सिखिले समस्त क्लियर हाँ कि नहीं यदि ये चारटा पॉइंट रे डाउट रहला को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन एनी डाउट ऑन these 4 points any doubt on these 4 points क्विक जल्दी जल्दी टिके कहिबे ताले कोन पढिला आज रो क्लास रो कोन सिखिला आज रो क्लास रो ना नहीं किछ सिखिला नो डाउट वेरी गुड एतिक सुनियार थिला मत ताले कोन सिखिला आज रो क्लास रो कोन कोन पढिला पढिला इन्फ्लेशन मीनिंग एंड टाइप impact हैला measures to tackle inflation हाँ causes भी पढ़िछ meaning type and cause वेरी गुड शिवांगी ताले मतलब होची बुझे गेला सब ना किछि डाउट अछि यदि डाउट अछि ताले कोन गुड ताले ठीक पढ़ी के आसो पुनी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिया भल लागुची इकोनॉमिक्स बुझी होची ना बुझी होनी बुझू तीनटा क्लास करची आज इन्फ्लेशन फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स सेकंड क्लास गतकाली कौन डिस्कस करथि गतकाली डिस्कस करथि अबाउट नेशनल इनकम आज इन्फ्लेशन तीनटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिस्कशन एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन थैंक यू शिवांगी ना कमेंटरी आफ्टर क्लास कमेंटरी लिखो सो दैट जो न्यू लर्नर्स मान को हेल्पफुल हो क्लास करिवे कि नहीं प्लीज राइट इन द कमेंट ये तो चैट रो एटा रहिवनी बट कमेंट लिखले अन्य माने देखि परिबे सो दैट दे विल यूज द क्लास बुझिला शिवांगी ओके सो पुणी नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि नुवा कांसेप्ट आनी के आसीबी आसना कली 9 टा टुमारो 9 to 10 pm थैंक यू पीयू थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गुड नाइट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास tomorrow at 9 pm so every day 9 to 10 pm economics every day 9 to 10 pm economics thank you that's all for this session